नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Before starting today's video, I would like you to give a quick recap of whatever we have seen till today. So basically, we are seeing the four noble truths, and in that we dealt in details with the first noble truth, that is nothing but the noble truth of dukkha, जिसे बोला जाता है. Second, we saw the cause of dukkha, that is nothing but the craving. And in the previous video, I gave the complete rationality, that is science and psychology. With I gave the complete psychology, and I talked over there that how these two noble truths are highly scientific. कि कैसे scientific है. Somewhere science is proving जो चीज़ें बुद्धा ने पहले प्रूव बताई थी वो साइंस और साइकोलॉजी अभी कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है. Now, if you haven't watched the previous video, I highly recommend you to go through that one first, and then if you go through this video, then it will make you a lot sense. Now, today's video is all about the third noble truth and the fourth noble truth. Third noble truth is nothing but जिसे बोला गया है cessation of dukkha. Now, cessation of dukkha, I told the second noble truth was nothing but the cause of dukkha. Cause of dukkha was nothing but craving. And if you want to get rid of the dukkha, you need to get rid of the craving. And once you get rid of the craving, एक बार आप craving से छुटकारा मिल जाता है आपको, so you reach a state. That state is nothing but the nirvana. Now this is a Sanskrit word. इसे संस्कृत में इसे निर्वाणा बोलते हैं. एंड निब्बाना इज a Pali word. So both words mean the same. They have the same connotation, but there is just a difference of language. Now, the $1,000,000 question which need to be answered over here is nothing but what is nirvana. Now, I would like you to elaborate this. I would like to flesh this point with the help of an analogy. एक तालाब में एक कछुआ और मछली रहते थे. मछली कछुए को बोलती है, क्या रे, बहुत दिन हो गए, आजकल तू दिखता नहीं है, कहाँ गया था सुबह सुबह. तो कछुआ बोलता है कि आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑन द लैंड. कछुआ बोलता है कि मैं सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए लैंड पे जाता हूँ. तो फिश बोलती है, या ऑफ कोर्स यू मीन. तो वो बोलता है कि वॉकिंग के लिए जाता हूँ. आई एम गोइंग फॉर अ वॉक ऑन अ लैंड. एंड मछली बोलती है कि या ऑफ कोर्स यू मीन स्विमिंग. देन कछुआ उसे समझाता है कि नो, यू कैन नॉट स्विम ऑन अ लैंड बिकॉज इट्स अ completely solid part. It's not liquid. You cannot swim on the land. You need to walk on the land. But मछली बोलती है, how it's possible. You cannot. There is only one thing called swimming. You cannot walk or something on the land. तो if you try to understand from this, तो आपको यहाँ से क्या समझने की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मछली मछली ने कभी लैंड देखी ही नहीं है, उसने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. then it becomes very difficult for a tortoise to explain what does it mean to walk on a land. तो यहाँ से हमें स्टोरी से पता चलता है कि टॉर्टाइज लीव्स द वाटर एक्सपीरियंसिंग अ रियलिटी बियॉन्ड फिश कॉम्प्रिहेंशन. मतलब टॉर्टाइज ने तालाब से जब वो बाहर गया, ही वेंट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड ही रीच्ड अ स्टेट that is equivalent to getting out of the pond and getting on the land and walk. एंड ये जो चीज़ है, फिश कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इट एट ऑल बिकॉज उसने कभी लैंड देखी ही नहीं है. उसकी सारी दुनिया जो होती है वो पानी में ही होती है, उस तालाब में ही है. तो वी कैन सी फिश हैज सर्टेन लिमिटेशन. फिश confined to water cannot grasp the concept of land. Similarly, enlightened mind struggles to understand the nirvana. So in the same way, if I try to explain the nirvana, in fact I don't have any experience of nirvana or something. तो ऐसा बोला जाता है, ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द स्टेट ऑफ निर्वाणा. इनफैक्ट जो हमारी लैंग्वेज कैपेसिटी है, वी हैव अ वेरी लिमिटेड लैंग्वेज कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंसिंग द स्टेट ऑफ निर्वाणा. वो ऐसा स्टेट होता है जिसमें हमारा माइंड, हमारी लैंग्वेज कैपेसिटीज, हमारी लैंग्वेज इतनी कैपेबल ही नहीं है कि उन चीज़ को हम एक्सप्लेन कर पाए, हम उस चीज़ को इलेबोरेट कर पाए.
So this is the thing. So there is, so nirvana is beyond a logic and reasoning. In fact, if you want to understand the what is the nirvana, and in fact it can only be experienced, it's highly subjective, because one can only experience it, one cannot explain it, because it is highly subjective, सबका experience अलग अलग होगा, and that's why it is beyond the logic and reasoning. In fact आपको logic and reasoning छोड़ के कहीं ना कहीं when you start thinking, because your mind will never let you to understand what nirvana actually is. अगर normally अगर आप देखने जाओ, so your mind will never let you understand. So आपको actually what Buddha said, we saw in the previous video, your mind see योर माइंड शो यू थिंग्स अपसाइड डाउन, मतलब चीज़ें आपको, आपका माइंड कंप्लीटली अपोजिट चीज़ें दिखाता है। रियलिटी देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट द निर्वाणा इज अ स्टेट विच इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन, क्योंकि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लैंग्वेज इज नॉट sufficient or is not capable enough to experience, to elaborate that state. It is a completely experiential wisdom. One can experience it, but one cannot express it into the world. And all you need to go is let all the concept, the way mind has been designed, nature ने जिस तरीके से mind को design किया गया है, उसके against में जाके आपको सोचना पड़ेगा, then we can reach the state of nirvana. Now this was a this was these are some lines which are written on a book, in a book, when I was going through that. So nirvana is a state beyond logic and reasoning. However much we may engage often as a very intellectual pastime. इसमें क्या बताया गया है कि हम कितना भी कोशिश करें, डजेंट मैटर हाउ स्पेकुलेटिव डिस्कशन वी मेक कि निर्वाणा कैसे हो सकता है, वो स्टेट कैसी हो सकती है, doesn't matter how much you imagine, doesn't matter how much you gossip, doesn't matter how much you hang out and talk about, discuss about this thing, all you can do is waste your time, because you will never understand what does exactly nirvana means. तो यहाँ पे simply बोला गया है, we shall never understand it that way, उस तरीके से हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे. तो simple thing is, instead of just talking, if we start following the path and if we put actions, then only we can reach to the state of nirvana. That's what I found in the, when I deep digger, when I deep deeper, when I went, quite deep, then I understood कि ऐसा बोला गया, and it's quite logical. Instead of making a discussion and speculative discussions about it, we must put action in order to experience it. So now this leads to the fourth noble truth, that is nothing but the noble truth, that is nothing but the noble eightfold path. Now ये eightfold path क्या है? That is, I told you, the third noble truth we saw, the cause of, the second noble truth was cause of dukkha, that was nothing but the craving. Third noble truth we saw, cessation of dukkha, that is cessation of craving, is nothing but the nirvana. A fourth noble truth है कि वो स्टेट के तरफ कैसे जाए, वो रास्ता जो निर्वाणा की तरफ जाता है, that is nothing but the noble eightfold path. Now इसे middle path भी बोला जाता है. Why it is called the middle path, I will explain it in the subsequent slides, because it is very important to understand what does exactly mean the middle path. Now for example, if you are a person who is seeking a happiness, if you are in a search of happiness, and if you are seeking a happiness using a sense pleasure, मतलब आपके जो senses है उसको अपील करके आप खुशी पाना चाहते हो, तो that is a ephemeral happiness, that is not a long lasting happiness. That's what Buddha said. For instance, if you are seeking happiness using cheap dopamine, that is binge watching a web series constantly, नेटफ्लिक्स में बाकी मूवीज देखते रहना, बिंज वॉच जो होता है कंप्लीट नाइट, एक नाइट में पूरा देखते रहना, इफ यू फील दैट that is a pleasure, no, absolutely you are wrong, because your mind is tricking you, your mind is fooling you. That's the reality. If you feel that drinking alcohol is giving you the pleasure, you are completely wrong. Same with the junk food, drugs, social media. अगर आपको लगता है कि रील्स देख के आपको खुशी मिल रही है, इनफैक्ट योर माइंड इज फूलिंग यू एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम गैम्बलिंग एंड ऑल दोस थिंग. तो बेसिकली अगर आप सेंस प्लेजर के ऊपर बेस्ड होके आप खुशी को ढूंढना चाहते हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस विच यू वांट, इफ यू वांट टू ऐड कलर, डेप्थ एंड रिचनेस टू योर लाइफ, यू कैन नॉट ऐड
add all those things with the help of this cheap dopamine, जिसे सस्ता नशा बोला जाता है. तो दिस इज द नॉर्मल थिंकिंग, ओके, जो नॉर्मल लोग करते हैं. एंड इफ यू आर अ पर्सन, देर आर टू एक्सट्रीम्स. एक तो है नॉर्मल जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, दूसरा है कि इफ यू आर सीकिंग हैप्पीनेस एंड इफ यू बिलीव दैट यू नीड टू बिकम अ मंक और एसेटिक, मंक बनना पड़ेगा, यू नीड टू डू द एक्सट्रीम सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जिसे बोला जाता है. if you feel that you need to self mortified yourself, extreme pain, खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, everything we need to leave, so that is not also the path. So there are two extremes. आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो extremes है. first there are, this is a spectrum, and इस spectrum पे एक और है जहाँ पे you are engaging yourself in a sense pleasures, that is जो मैंने last slide में बताया है. And on the other end of the spectrum there is a self mortification. extreme level पे आप जाके चीज़ों को कर रहे हो. when Buddha did, in fact he himself did both the things. He observed himself while he was taking a happiness from a sense pleasure, from senses, and he went to the extent also extreme. आपने ऐसा इमेज देखा होगा, when Buddha was meditating under a tree, he did a he went to the extremes in the self mortification. खाना पीना सब कुछ बंद करके he tried to meditate. in both the state he didn't get anything. दोनों में लॉर्ड बुद्धा फेल कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वे, क्योंकि उनको यहाँ पे एनलाइटमेंट मिला ही नहीं. एंड व्हेन ही गॉट द एनलाइटमेंट ही रियलाइज दैट देयर इज अ मिडल पाथ. मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ मोटिफाई खुद को एकदम परेशानी, यू आर मेकिंग योर सेल्फ, यू आर इंड्योरिंग अ लॉट ऑफ पेन, यू आर मेकिंग योर सेल्फ टू इंड्योर अ लॉट ऑफ पेन. और ये ज़रूरी नहीं है. ना ही अगर आप नॉर्मल सिंपली जैसा आपका माइंड डिज़ाइन किया गया उसी तरीके से जीते हो तो भी आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगा. तो ही फाउंड अ मिडल पाथ, दैट्स, इसे बोला गया है एट फोल्ड पाथ. एंड दिस that's why it's called the middle path. So जो ज़्यादा easy भी नहीं है, which is not that very easy and not that much difficult also. So that's why it is called the middle path. I hope you are understanding whatever I am trying to convey over here. So yeah, then when he got the enlightenment, he realized that there is a middle path. Uh, there is no there is no requirement to go to the extremes. जाने की ज़रूरत नहीं है. ना ही माइंड जैसा डिज़ाइन किया गया है उस तरीके से सेंस प्लेजर के पीछे भागने से आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है. तो then he gave the eightfold path, that is nothing but our fourth noble truth. Now let's see what is the eightfold path. So eightfold path is nothing but the Buddha's prescription for human suffering. I told you that बुद्धा का जो example, that analogy I gave you, that Buddha is a modern physician, ऐसा बोला गया था. The way physician treats a disease, in the same way Buddha tried to cure the human predicament, that is human suffering. एंड उसका जो किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले फाइंड करेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, दैट इज नथिंग बट व्हाट एक्चुअली happening, what's the problem. So Buddha said there is a problem of dukkha. So second is nothing but the once diagnosis हो गया दुखा, then he will try to find the cause, why there is a, आपको जो भी डिसीज हुआ है उसका कॉज क्या है, दैट इज नथिंग बट द क्रेविंग. देन थर्ड स्टेज इज नथिंग बट सीजेशन, दैट इज इसको कैसे दूर किया जा सकता है. एंड फोर्थ इज नथिंग बट जो आपको डॉक्टर देता है प्रिस्क्रिप्शन, जो टैबलेट्स देता है कि ये खाओ आप ठीक हो जाओगे. दिस इज व्हाट नथिंग बट द एट फोल्ड पाथ इज. तो इसे बुद्धास प्रिस्क्रिप्शन फॉर ह्यूमन सफरिंग भी बोला जाता है. Now we can study this Eight Noble Path under three heads. First head is nothing but ethical conduct. Second head is mental discipline, and third head is wisdom. I will go into details of each and every head. For time being, I am in this video. I am just giving you a bird's eye view. Actually, kya path? What exactly the path is. Now, what Buddha said, कि if you want to develop as a person, any kind of development can be achieved only with the help of certain things. And yeah, this is the foundation of human development. This is what the Buddha said.
तो इथिकल कंडक्ट में अगर आप देखोगे तो इथिकल कंडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर है, यू कैन सी द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज दिस टू थिंग्स, दैट इज नथिंग बट कंपैशन एंड विजडम. नाउ कंपैशन इज को आप मॉडर्न फैंसी वर्ड में अगर आप बताना चाहोगे तो इट इज नथिंग बट द इमोशनल इंटेलिजेंस विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन डिटेल्स व्हेन आई मेड अ सीरीज ऑन द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ही बोला गया है कंपैशन, कि यू नो योर इमोशंस वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड you understand others emotions also. You the moment you came across someone or any companion of yourself, you understand their emotion and you try to treat them the way they are feeling so that they can feel better. So that is nothing but the compassion. खुद की emotions को समझना, दूसरों की emotions को समझना और उस तरीके से behave करना, not letting yourself colored with the emotion, that is nothing but the emotional intelligence, और उसी को compassion बोला गया था. So emotional concept जो हम fancy word बोलते हैं, जो अभी अभी word ज़्यादा psychology में use होता है, this was already given by the Buddha almost 2500 years ago. Now how he knew at that time, I don't know. Second is the wisdom. इसे अगर हम अगेन फैंसी वर्ड बोलूँ तो इट इज़ नथिंग बट द लॉजिक. तो चीज़ों को यू नो नॉट कंप्लीटली ब्लाइंडली बिलीविंग ऑन द थिंग्स, जो ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस होता है, वो वैसा नहीं, खुद का लॉजिक यूज करना, दैट इज नथिंग बट द विजडम. सो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. इनफैक्ट व्हेन आई मेड अ सीरीज ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, so what does personality exactly mean? So I told you there are four dimensions of human personality: PQ, IQ, EQ and VQ. So what this compassion, compassion is nothing but emotional question and wisdom is nothing but IQ. So it is a, what Buddha is talking about these two heads of the personality. And I told you these four dimensions are like a four legs of a table. इनमें अगर the way, if there is an imbalance in a one of the legs of a table, the way table cannot stand. In the same way, if there is a problem in one of the dimensions of your personality, you will not have a balanced personality. So what Buddha is talking about, he is talking about the balance of these both things, that is IQ and EQ, that is compassion and wisdom. Now if I want to explain its psychology, अगर मैं इसका psychology explain करना चाहूँ, so simply what he is talking about, if we go in details and if we see the psychology, so your left part of brain is nothing but, इसे logic बोला जाता है, it is logical brain, and your right part of your brain is called the emotional brain. तो दिस इज, यू कैन से, इसको आप लॉजिक बोल सकते हो या विजडम बोल सकते हो, एंड इसको आप बोल सकते हो कंपैशन, जो बुद्धा ने बोला था. तो हियर यू कैन सी what Buddha is teaching, basically is teaching us to have a balance between the both the hemispheres of your mind. So there are two parts of your mind, and what he's asking to maintain at least bringing both the parts into the harmony so that you can live a happy life. So it's highly scientific what he said at that time. Now how he knew at that time all those things which is science is now expressing, that is a bigger question still which need to be answered. So basically this is the entire science. So he is asking us to maintain the balance between your logic and emotion. Yeah. And he said that a person who is highly logical but not emotional, he will be the a very rude person or egoistic person, you can say, जिसका आप देखोगे, यू विल सी द पीपल लाइक दिस, जो जिनका नॉलेज बहुत होता है उनके पास. इनफैक्ट नॉलेज, आई कैन नॉट से नॉलेज इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, विजडम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. कौन से इंफॉर्मेशन को कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है, दैट इज अ विजडम. तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज काइंड ऑफ स्टफ होता है बट उसके इमोशनल अगर ट्रेनिंग नहीं होता है, तो ही विल बिकम वेरी इगोइस्टिक रूड पर्सन. एंड इफ जिसका जिसके पास नॉलेज कम होता है, जिसका लॉजिक काम नहीं करता है और इमोशन से भरी पड़ी है, ही विल बिकम अ इमोशनली फूल पर्सन. He will become an emotional person and people can easily fool that person
because you are emotionally color, you easily get colored with the emotion. People can easily manipulate you because emotions are not long lasting. So that's what he said. In order to have a balanced personality, or in order to develop in any domain of your life, you need to have the balance between those things, that is logic and emotion. That's what he said, and I hope you are understanding what I'm trying to convey over here. Now let's see ki whatever is it whatever Buddha said, is it relevant in today's century? क्या हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो कंपैशन बोला था बुद्धा ने, क्या वो सही में ज़रूरी है? लेट्स सी. Now, recently in the month of August, there was a this report. This was NCRB का report, a National Crime Record Bureau का report आया था, and in that report it was found that student suicides in India is now more than the population growth rate. Now you can see that report has labeled students suicide an epidemic that is sweeping India. So, and if you see again in the details, so सबसे ज़्यादा सुसाइड जो हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? सदर्न स्टेट्स में, दैट इज साउथ इंडिया में. नाउ लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ अस फील दैट साउथ स्टेट्स जो है, सदर्न स्टेट्स जो है, साउथ इंडिया जो है, वहाँ दे आर हाईली लिटरेट. यू कैन सी केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है. हमारी आईटी कैपिटल जो है बैंगलोर, दैट इज आल्सो इन द साउथ. एंड इफ एवरी इफ इफ एजुकेशन इज एवरीथिंग, अगर माइंड का ट्रेनिंग ही सब कुछ होता एंड इमोशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं होती, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. सो डज इट मीन दैट लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुसाइड्स? This report shows that somewhere we need to maintain the balance of the both thing, and that's what I'm trying to convey over here. Whatever he Buddha said 2500 years ago, that is relevant today also, because somewhere we are not able to manage our emotions. IT people, engineers, software developers can the manage the very difficult problem in the outside world, but the moment they came across the problem in the inside world, they crash. And that's what is happening. And if you see, ये जो स्टूडेंट सुसाइड, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में ज़्यादा हो रहा है. वाई ये स्टूडेंट्स में हो रहा है? बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग a tremendous amount of pressure, peer pressure, intense competition, neck break competition is outside, and they are not able to manage their emotions. और इमोशनल मैनेज नहीं हो रहा है, दैट इज कंपैशन जो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट ऑफ ब्रेन वो ट्रेन नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई दे आर सुसाइडिंग, एंड दैट्स एक टाइप का इपिडेमिक है. दैट्स व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग. एंड दिस इज द थिंग कि हमें कहीं ना कहीं सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इनफैक्ट देर वॉज अ फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेनिंग एजुकेटिंग अ माइंड without training a heart is no education at all. Training a mind without training a heart is no education at all. So this is what the thing is, whatever he said, that compassion and wisdom, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन दोनों का बैलेंस नहीं है तो you will not able to live a happy life. Simple thing. Yeah, it's good to have a emotion. इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट अगर आपका लॉजिक काम नहीं करता है, एक इंसान आपके साथ बार बार गलती कर रहा है, एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग दैट कि मैंने उसे माफ़ करना चाहिए, नो. Always remember what I have learned in my life: be kind enough to forgive, but don't be stupid enough to trust again. अगर आप कोई इंसान गलती कर रहा है बार बार और आप बोलते हो कि नहीं कंपैशन होना चाहिए, माफ कर रहे हो, नो, यू आर स्टूपिड, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, क्योंकि आपका विजडम, आपका लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है. दैट पर्सन इज कमिटिंग अ मिस्टेक, ही इज हैविंग अ सेम बिहेवियर विथ यू. सो at that time you should understand what you need to do. I hope I am making myself clear over here. So, in order to get into the leadership position, or if you want to have a great personality, if you want to become a gentlewoman, or whether it is a whether it is a corporate leadership, or whether it is a military leadership, अब अगर आप एक gentlewoman बनना चाहते हो, या if you want to become a lady, and if you want to become a gentleman, so you need to have the balance of these two things: compassion
and wisdom. And in order to get into the leadership, in fact ये जिनका बैलेंस होता है लॉजिक और इमोशन, दे आर द नेचुरल लीडर्स, वो नेचुरल लीडर्स होते हैं. And people naturally start following them because there is a healthy blend of both emotions as well as logic. तो what बुद्धा was talking about, वो पाथ अगर हमने कहीं ना कहीं फॉलो किया तो yes we can have a, though we cannot have a nirvana completely, but at least we can have a happy life. That's what I am trying to convey over here. So if you see the ethical conduct, these are the three heads. First head is nothing, ethical conduct. Ethical conduct में आता है right speech, right action, right livelihood. I'll make a separate video on each head. For time being I am just giving you a bird's eye view. Next is your mental discipline. Mental discipline में आता है right effort, right mindfulness, right concentration. And third but not least, that is nothing but wisdom. इसमें आता है right thought and right understanding. So this is the eight noble path. I'll make a separate video on all the three heads. Thank you guys, that's it for today. If you like the video, don't forget to like the video, subscribe my channel. If you want to connect with me, you can connect with me through Instagram also, Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you guys, thank you for watching this video. Have a great evening ahead.